we are considering only real sequences, and the notation that we have reserved for that is usually used, for example, if the image of any natural number n under f is written as xn, then we denote this sequence using by this notation. There are other notations also. There were some properties, convergence. What is a convergence of a sequence? And let me recall this also. Convergence of a sequence means that we say that this sequence converges to a real number x if for each epsilon positive we can find a number n naught depending upon epsilon such that the distance of the terms from the number x becomes less than epsilon as n increases beyond n naught. If this is true for every epsilon, then we say that this sequence xn converges to the number x, and how it is denoted, we usually write this in a notation as xn converges to x, or it is also written as limit xn equals to x, and limit, you just simply write limit, or you may write limit n goes to infinity xn equals to x, and in this case this x is called the limit of the sequence xn. This is called the limit of the sequence n, and there were other properties also that we have discussed, but now what we are going to talk today is the idea of subsequences. These are sequences, but they will be taken out of sequence. Subsequence क्या है? Subsequence आपके पास एक गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस में से ही आपने एक सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करनी है, उस गिवन सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को डिलीट करो या कोई भी टर्म डिलीट ना करो, बस ये होना चाहिए कि उस सीक्वेंस की टर्म्स का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. So that is the way. For example, let me begin with an example, then I will write the formal definition. Let us consider a sequence, a noun sequence. Consider a sequence, this sequence 1 upon n, and if I write it in expanded form, is its first term is 1, its second term is 1 by 2, then its third term is 1 by 3, so on. Okay, or I can write it as I can write is that let xn is equal to 1 by n, then you may write it as x1 equals to 1, x2 is 1 by 2, x3 is 1 by 3, x4 is 1 by 4, and so on. So these are the terms of the sequence. Now what we have to do, we have to uh, delete some terms. We have to delete some terms from this sequence, and what will be left to us will be known as a subsequence. For example, if I delete all the terms of this sequence with odd indices, जिसके भी हैं सारे delete करूंगा, तो let me, for example, if let me give different color to it. If we delete, this is just an example, we can do it in many other ways. If we delete all the x odd terms, 2n minus 1 term, all those terms from the given sequence, from the given sequence, so what we are left with, we are
left with we are left with only a first, then what, all the odd terms are deleted. That means at first position, that is x1 has been deleted. So the sequence will begin with 1 by 2, x2. Oh, okay, let me write in this different way, not 1 by 2. So we will be left with x2, x4, x6, x8, so on. What we have done, we have deleted all the terms. We have deleted x1, we have deleted x3, we have deleted x5, x7, so on. So these are the deleted terms. So the deletion is in such a way that order doesn't change. The order of the terms doesn't change. Order of the term means that the position of x4 will remain where it was with respect to x2. x2 है आपके पास 1/2, x4 आपके पास 1/4 है। ये जहां पर था x2 और 1 2 के रिलेशन में, ये पहले भी वहीं पे था। ठीक है जी। तो इस तरह से जो कुछ बचेगा हमारे पास, सो अगेन व्हाट वी आर हैविंग नाउ x2, x4, x6, सो ऑन। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, व्हाट यू आर हैव 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, सो ऑन। या आप इसको और nth टर्म की फॉर्म में लिखें तो you are having 1/2, and this is also another sequence. So this is a sequence. This is also a sequence. This is also a sequence. Uh, but this is a particular sequence which we obtained from a given sequence, and this sequence is known as a subsequence. This is known as a subsequence. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, then let me now define it formally. What do we mean by a sequence? Let me give it a definition. Uh, Given a sequence xn of real numbers, and let n1 less than n2 less than n3, so on, so on, so on, be a strictly increasing sequence of natural numbers. Then now these are n1, n2, these are natural numbers, and these natural numbers are some indices of the terms of the sequences. So these what I can say कि ये जो natural numbers n1 n2 मैं ले रहा हूँ, ये n1 n2 किसी terms के indices हैं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, उन terms को ले लेते हैं। Then the sequence, इसके corresponding in terms के corresponding जो sequence हमें मिलेगी, जिसकी पहली टर्म xn1 होगी, इसी xn में से हम चूज कर रहे हैं, जिसकी दूसरी टर्म xn2 होगी, xn3 होगी, इस तरह से ये जो सीक्वेंस होगी, then this sequence is called a subsequence. This is a subsequence of the given sequence xn. So this is what we are doing. हम कुछ टर्म्स बाकी xn में से डिलीट कर रहे हैं, ये n1 n2 n3 वाली टर्म्स को रख रहे हैं, तो then this is a subsequence. Is it okay? Yes, sir. Yeah. Okay. So let us now just respond to me. What I'm going to do. I'm just considering again the same sequence.
xn equals to 1 by n। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख लीजिएगा, दिस इज 1, 1/2, 1/3, सो ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताएंगे कि इज ये अगर मैं ले लेता हूँ 1, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/2, 1/2, so on। ठीक है, is this a subsequence? Is this a subsequence of this given sequence 1 by n? Anybody answer? Hmm? क्या ये subsequence है given sequence की? So what is the condition for a sequence? क्या बोला आपने? यस सर, है सर। क्या कंडीशन क्या है सबसीक्वेंस होने की? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंडीशन? अब आपने क्या करना है, देखिए, ठीक है जी, ये जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस का x1 आपके पास 1 है, वही आपके पास वही आपके पास इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी है, ठीक है। ये इस गिवन सीक्वेंस का x1 है, और 1/3 क्या है? 1/3 किस पोजीशन पे है? ये 1/3 x3 पोजीशन पे है, ठीक है। थर्ड टर्म है ये गिवन सीक्वेंस की, ये गिवन सीक्वेंस है, दिस इज गिवन सीक्वेंस, इसकी सब सीक्वेंस ले रहे हैं ना, ये थर्ड टर्म है। व्हाट इज 1/2? 1/2 इज सेकेंड टर्म। तो आपको यही तीन टर्म्स देखकर ही पता चलेगा कि दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस में मैंने कहा था, सब सीक्वेंस क्या होती है? सब सीक्वेंस आपके पास गिवन सीक्वेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होता है टर्म्स का। अब देखो ना, यहाँ पर इस अगर ये सब सीक्वेंस होती तो सेकेंड टर्म जो फर्स्ट गिवन सीक्वेंस में है वो थर्ड टर्म के बाद नहीं आती ना, सेकेंड टर्म तो थर्ड टर्म से पहले आती है ना, बाय रूल। पहले फर्स्ट टर्म आएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस की सेकेंड और थर्ड टर्म भी अपीयर हो रही हैं, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हुआ है, यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ है यहाँ पर। Therefore, this is not a subsequence. This is not a subsequence. This is not a subsequence. So this has to be very careful कि आपको sequence में से subsequence कैसे choose करनी है जी, ठीक है? You must try to do these things. Now next, what we have to talk about, we have to discuss about the convergence of a subsequence. Since it is a subsequence, it is getting ये किसी sequence से आ रही है, इसका खुद का वजूद वो बाद में होगा, क्योंकि सबसीक्वेंस इटसेल्फ इज अ सीक्वेंस, वो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज बाद में होंगी। लेकिन ये जिस सीक्वेंस से हम इसको ले रहे हैं, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, लेट मी ट्राई टू ड्रा सम पिक्टोरियल। वी आर हैविंग सीक्वेंस लाइक, है ना, ये इस तरह से सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। इसमें से हम सब सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सट्रैक्टिंग सब सीक्वेंस आउट ऑफ इट। Let us say I'm taking this term here, I'm taking this term maybe, इस तरह से ये सब सीक्वेंस अब आप इसमें से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कुछ टर्म्स का। ये आपके पास x1 आ गया, ये आपके पास x3 आ गया, ये आपके पास x6 है, ये x9 है, इस तरह से ये टर्म। नाउ दिस इन इटसेल्फ इज अ सबसीक्वेंस, इस तरह से दिस इज अ सीक्वेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो जिस सीक्वेंस में से ये आप निकाल रहे हैं, तो उस सीक्वेंस से क्या इनहेरिट कर रही है ये सीक्वेंस? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट
does a subsequence inherits from the sequence? जिस सीक्वेंस से ये वो निकलती है उस सीक्वेंस से ये क्या क्या लेती है जी? सम स्टूडेंट सेइंग कि उसे स्क्रीन नहीं दिख रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रही है उसको स्क्रीन, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। Okay, so now what as I said that we have to see this thing कि एक सब सीक्वेंस अपने सीक्वेंस से क्या इनहेरिट करती है, ठीक है? द फर्स्ट थिंग जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट चीज जो हमने देखनी है that I am going to record as a theorem is that any subsequence, एक सीक्वेंस की बहुत सारी subsequences हो सकती हैं जी, infinitely many. तो what I'm going to say, subsequence of a convergent sequence is convergent. The first thing is कि किसी भी सीक्वेंस की अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है? लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एंड इसके कन्वर्स की मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ। लेट अस फर्स्ट गिव द एग्जांपल ऑफ दिस। तो इसका कन्वर्स क्या बनता है? लेट अस राइट फर्स्ट इट्स कन्वर्स। इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट बनती है कि इफ a subsequence of a sequence is convergent, then the sequence is convergent, then the sequence itself is convergent. So what I'm going to do, I'm going to say that okay, this converse is something which is not true. This is not true. एक subsequence convergent होने से पूरी sequence convergent नहीं होती है. Let us look at this example. Let us look at this example. Consider the sequence. ये वाली sequence आपने हमने इसको as we have seen already that this is a divergent sequence. This is a divergent sequence. That means we already know the behavior of this sequence. This is divergent. And अगर मैं